discuss that particular thing. So we were discussing about the comparator. So we have seen the concept of comparator where simply say comparing something. Okay, that means the unknown parameter with this known standard basically, and that simply gives you the difference. So we have started with this particular. Again, have a brief idea what we did last time. So we have started with this concept of comparator. We have started with this particular one, that is direct measurement and the comparison. Then some requirement as far as the comparators are concerned. The classification, these are the mechanical comparator, mechanical optical comparator, electrical and electronics comparator, pneumatic comparator, and other type of comparators are also there. So one of the commonly used comparator, that is the dial indicator that we have seen. There is a dial, there is a plunger, there is a contact point, the plunger moves up and down, and that there is a gear turn arrangement, and that amplify whatever the moment of this particular plunger on a scale, and that gives you the reading. So this is I got this figure, that is a mid. This is the company, this Japanese company basically, that is Me2 Toya. Okay, so this is the one. The actual computer look like this particular way. So कल हमने ये figure देखा था उसका final parts of comparator, the dial, the for example indicating hand, bezel clamp, that clamping purpose to lock that scale basically, and then mounting etc. So this is a continuous comparator. This is a balanced one, positive, negative. That is possible with the balanced comparator values. Then we have gone through the different, for example, this application for this comparator. These are the different types of the contacting points, standard contacting point. Mostly we are preferring a standard point which is spherical in nature because we require the point contact. And wherever there is a small space which is available, taper points are used, like measurement of a outer diameter or inner diameter of your this screw thread profile basically. Button type, flat surface, button type flat, white flat, and so on. So depending upon the requirement we are using, say this kind of say the contact point. ये इसका actual figure है, मतलब जो contact point आपको set आता है इसका मिल जाता है इसमें. So then this is the working mechanism that I told last time. Okay, how it works. उसके बाद आते हैं ये gear train आपको बाद में बता लगेगा. This is the way to mount that comparator on this flat surface and then carry out the measurement of a that means comparison of the height or the linear, for example, the dimension. And these are the guidelines for the comparator that is to be used. Then we have seen about the Johnson's microcrater, where there is a this particular sort of say this twisted metal strip is there. There is a pointer. ये इसका साइड व्यू है, फ्रंट व्यू, इट विल लुक लाइक दिस पर्टिकुलर. यहाँ स्केल होता है, ये पॉइंटर आपका ये इधर मूव करता है. एक मिनट में इसको देता हूँ. ये ऐसे मूव करेगा, ये पॉइंटर है यहाँ, ये आइदर दिस वे और दैट वे ये मूव करेगा. दैट विल गिव यू फॉर एग्जांपल करस्पॉन्डिंग रीडिंग, जो भी आपको रीडिंग चाहिए. तो वी आर सीइंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. इसका ये फिगर मैंने और आपको बताया था. दिस इज द फिगर व्हिच इज अवेलेबल इन द बुक. दिस इज द फिगर फ्रॉम दिस सम साइट बेसिकली. आई थिंक दैट लुक्स गुड. And then we have, for example, sigma comparator. We were here somewhere. So it's a simple mechanical comparator developed by the Sigma Instrument Company. Linear displacement of plunger is translated into the moment of pointer over a calibrated scale. It is just like that particular. There is a plunger that moves up and down, and that is transferred to, for example, the pointer, and pointer will give the corresponding value, the difference basically. The figure illustrates the working part of Sigma comparator. तो इसका फिगर मैं दिखा देता हूँ आपको. प्लंजर इज द सेंसिंग एलिमेंट दैट इज इन कांटेक्ट विद द वर्क पार्ट. मूव्स इन अ स्लिट वॉशर. लास्ट टाइम मैंने बताया था कि प्लंजर जो रोटेट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम स्लिट वॉशर यूज करते हैं, व्हिच प्रोवाइड द फ्रिक्शनलेस लिनियर मूवमेंट एंड आल्सो अरेस्ट द रोटेशन ऑफ द प्लंजर अबाउट इट्स एक्सिस. The knife which is screwed onto the plunger which bears upon the face of moving member of the cross strip hinge. तो ये इसका मैं फिगर ये दिखाता हूँ आपको. ये क्रॉस हिंज स्ट्रिप होती है, ये वाली, ठीक है ना. ये फिक्स ब्लॉक होता है और ये मूविंग ब्लॉक है. ये नाइफ एज है. नाइफ एज इज कनेक्टेड टू, फॉर एग्जांपल, दिस पर्टिकुलर प्लंजर
और ये आपका जॉब जिसपे इसको मूव करना है, ठीक है। तो जैसे ये दिस नाइफ एज ड्राइव्स फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर से मूविंग ब्लॉक बेसिकली दैट इन टर्न से मूव्स दिस पर्टिकुलर वाई आर्म। जैसे वाई आर्म मूव करेगा, ये पॉइंटर लगा हुआ है, ये पॉइंटर दैट विल मूव ऑन दिस पर्टिकुलर स्केल एंड दैट विल गिव द corresponding reading over here. So this unit comprises a fixed member and a moving block connected by thin flexible strip at the right angle to each other. Whenever the plunger moves up and down, the knife edge drives the moving member of the cross strip hinge assembly. ये बताया ना, ये वाला this particular one. तो ये moving block है, ये fixed block है for example, and it deflect an arm which divides into Y form. ये Y form में divided है. Look at this one. ये रहा Y, ये रहा Y type, ठीक है। Y form. The extreme ends of these arms are connected to a driving drum by means of a phosphor bronze strip, ठीक है। The moment of the Y small displacement of measuring plunger are initially amplified by the lever mechanism point pivoted about a point as shown in the figure. Look at this particular one. ये आपका प्लंजर है, ये कैंटिलीवर टाइप सिस्टम है, ये पिवोट है फॉर एग्जांपल। तो ये प्लंजर जो है ऊपर नीचे जाएगा एंड दैट विल, ये इससे कनेक्टेड है मिरर से, ठीक है। और यहाँ ये आपका लाइट सोर्स है, जैसे आया यहाँ लाइट सोर्स यहाँ से, ठीक है ना। देयर आर डिफरेंट फॉर एग्जांपल लेंसेज दैट वी आर यूजिंग। यहाँ गिरेगा, जैसे डिवीजन होगा तो ये स्केल जो यहाँ स्केल लगा हुआ है इस पे, तो ये आपका फॉर एग्जांपल it will the light will be reflected on this particular scale, so you can find out for example the difference over here. So look at this particular thing. The lever mechanism pivoted as shown in the figure. The mechanical system causes the plane reflector to tilt about its axis, है ना। ये जो ये सिस्टम यहाँ कनेक्टेड है, ये आपका पिवोट है दोबारा से, तो it will move up and down accordingly. This is followed by a simple optical system wherein the pointed image is projected on the screen to facilitate the direct reading on the scale. The plunger is spring loaded such that it is biased to exert a downward force on the work part. तो इसमें upward force नहीं लगेगा, downward force ही आपको लगाना है, upward नहीं लगाना है। तो it is we are loading the plunger in such a way that this bias also enables both the positive and the negative reading depending upon whether the plunger moves and up and down. तो वो फोर्स आपका नीचे लगेगा, आप ऊपर लगेगा तो वो ऊपर मूव हो जाएगा। So that's why अब because of this one, because वो constant है, प्रेशर उसमें लग रहा है, तो जो भी आपका सरफेस मान लो हेवी है, ये जैसे भी है, you will get for example that sort of reading over here. क्या हो गया, ठीक है। So look at this, the arrangement for this principle of mechanical optical comparator. The scale is set to 0 by inserting a reference gauge below the plunger. Now the reference gauge is taken out and work part is introduced below the plunger. तो ये जो है, मान लो जैसे पहले आपने इसके नीचे एक स्लिप गेजेस आपने रख दी, वो स्टैंडर्ड आपने मेजर कर लिया कि आपको 30 mm चाहिए फॉर एग्जांपल, या जो भी आपने अगर सरफेस मेजरमेंट कर रहे हो तो उस केस में यू हैव टू सेट फॉर एग्जांपल सम आरए वैल्यू बेसिकली, ठीक है ना, जो चाहिए आपको। और देन यू विल मूव दिस प्लंजर ओवर सरफेस। अगर मान लो आपको लीनियर मेजरमेंट करना है, थिकनेस मेजर करनी है, उस केस में ये कई सारे स्टैंडर्डाइज्ड स्लिप गेजेस इसके नीचे रखेंगे, उसको मेजर कर लेंगे, वो सेट कर लेंगे। यहाँ फॉर एग्जांपल यू विल गेट सम रीडिंग ओवर हियर। और जैसे जो ऑब्जेक्ट आपको मेजर करना है, फिर उसको उसके नीचे रखेंगे, तो इट विल शो द डेविएशन फ्रॉम दैट व्हाट इज द स्केल दैट यू सेट, मतलब 0 पॉइंट जो होगा वहां से आपको इसका डायरेक्ट रीडिंग मिल जाएगा। So and क्या कहाँ थे हम लोग, this scale is set by 0 and plunger below. This causes small displacement of the plunger which is amplified by the mechanical lever. The amplified mechanical moment is further amplified by the optical system due to the
टिल्टिंग ऑफ द प्लेन रिफ्लेक्टर, जो मैंने आपको बताया था, ये प्लेन या मिरर है, मतलब रिफ्लेक्टर ये, ठीक है, ये भी टिल्ट हो जाएगा तो वो एम्पलीफाई हो जाएगा बेसिकली। रिफ्लेक्टर, a condensed beam of light passes through an index which normally compares set of cross wires. This image is projected by another lens onto the plane mirror, ठीक है। So the mirror in turn reflects this image onto the inner surface of the ground glass screen which has scale. तो जैसे मैंने एग्जाम आपको दिखाया कि यहाँ से आएगा ये, and then you will get something, some image or something add on this particular, for example, scale. तो जिस तरह से भी आपको रीडिंग करनी है, अगर ग्रेजुएटेड स्केल है तो ग्रेजुएटेड स्केल से, प्रोफाइल है तो प्रोफाइल के हिसाब से, जैसे भी है वो आप कंपेयर कर सकते हो उसमें। कहाँ थे प्लेन का, ठीक है। The difference in the reading can directly read on this calibrated screen which provides the linear difference in the millimeter or fraction of millimeter. Optical magnification provides a higher degree of precision in the measurement due to the reduction of moving members and better wear resistance qualities. तो ऑप्टिकल में ये सबसे एडवांटेज होता है कि मूविंग पार्ट्स नहीं होते तो चांसेस ऑफ एरर इसमें कम हो जाता है, लेकिन यहाँ ये कंबाइंड सिस्टम है, दैट इज द ऑप्टोमैकेनिकल कह लीजिए या मैकेनिकल ऑप्टिकल सिस्टम कह लीजिए इसको। So this kind of system is there for the calibration for comparison purpose, maybe in terms of say profile, maybe in terms of say this dimensions like say this millimeter etc. अब एक कंपनी है, ये जेस बोलते हैं उसको, जेस जो भी है, अल्ट्रा ऑप्टीमीटर। This ultra optimeter is another mechanical optical comparator that can provide higher magnification than the simple mechanical optical comparator. तो अभी हमने क्या देखा, शुरू से हमने देखा कि कंपैरेटर्स आर बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ वर्किंग बेसिकली एंड द मैग्निफिकेशन, हाई एंड लो मैग्निफिकेशन। हमारा पर्पस क्या है इस पर्टिकुलर केस में, वी आर यूजिंग सम सिस्टम, मे बी मैकेनिकल, मे बी इलेक्ट्रिकल, मे बी न्यूमेटिक, मे बी इलेक्ट्रॉनिक, मे बी इलेक्ट्रिकल, एवरीवेयर आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मैग्निफाई whatever the signal that we are getting so that we can read it and we can, for example, say on a certain scale and we can know about the difference. So now this is the better one, the ultra optimeter. This magnification is made possible by use of two mirrors which create double reflection of light. The figure illustrates the working principle of this ultra optimeter. It is preferable to have the monochromatic light source passing through a condenser lens followed by an index that carry the image to crossword onto tilting mirror. अब ये देखो, ये फिगर है इसमें, अच्छा फिगर बाद में, look at this particular. तो यहाँ दो मिरर आपके पास है, जैसे एक तो ये हो गया, ये दूसरा ये हो गया। Look at this light source, for example, this for example say this lens for example. तो यहाँ से ये लाइट रे आएगा, यहाँ कंडेंसर, तो यहाँ से आएगा, यहाँ गिरेगा, यहाँ से फिर स्ट्राइक करेगा दूसरे मिरर पे, वहां से दोबारा वो पहले मिरर पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ फिर यहाँ से जाके वो यू कैन ऑब्जर्व विथ रिस्पेक्ट टू योर आईज ओवर हियर। एंड इसके नीचे ये वर्क पार्ट है, ये वर्क पार्ट है जिसका सरफेस या जिसकी थिकनेस आपको मेजर करनी है, कंपेयर करनी है। बेसिकली वर्किंग वही है कि इनिशियली आपको स्लिप गेजेस उसके नीचे रखनी है टू सेट द सर्टेन वैल्यू, और उसके बाद फिर जो भी ऑब्जेक्ट आपको मेजर करना है, जिसका कंपैरिजन करना है, यू कैन जस्ट पुट इट अंडर दैट पर्टिकुलर वन। और यहाँ ये प्लंजर है, तो नेचुरली दिस डेविएशन, जैसे प्लंजर अप एंड डाउन मूव करेगा तो ये आपका मिरर भी जो अप एंड डाउन होगा, अकॉर्डिंगली देयर इज अ फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइट ओवर हियर। तो लुक एट दिस वन। सो पहले क्या था कि ऑन टू अ टिल्टिंग मिरर, mark mirror number 1 in the figure. Mirror 1 reflect the image onto the mirror number 2 kept parallel to it, which is again reflected on the mirror 1. After the reflection from the three surfaces in succession, the light ray pass through an objective lens. The magnified image is formed at eyepiece after passing through transparent graticule. वो मतलब जिसमें कई सारे lines बने होते हैं ना, that particular one. So graticule has a scale that enables the reading of linear displacement of a plunger. The working of a comparator is quite similar to the previous one. The moment of the plunger corresponding to the change in the linear dimensions of a work part with respect to the standard. The plunger moment tilt mirror 1 which moves image of a cross wire over a scale. So जैसे मैंने बताया कि जैसे प्लंजर आपका कहाँ गया, अरे
तो ये नेचुरली ये टिल्ट होता है मिरर, यहाँ कुछ अरेंजमेंट होगा, हालांकि ये फिगर में वैसे क्लियर नहीं है, बट मिरर इज दिस, मिरर इज टिल्टिंग फॉर एग्जांपल। तो जैसे जैसे प्लंजर ऊपर नीचे होगा ये टिल्ट होगा, अकॉर्डिंगली विल गेट दी फॉर एग्जांपल इमेज ओवर हियर, और यू कैन गेट फॉर एग्जांपल से रीडिंग एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। हाँ ये थोड़ा सा इसका बेटर फिगर में लग रहा है मुझे। हाँ ये क्रिटिकल होते हैं, ये लाइट है आपका, देन दिस कंडेंसर, द ग्रीन फिल्टर जो भी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है, ये हाइट है आपकी, ये आपका मिरर है, ये मिरर 2 है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, एंड सो ऑन। So the scale is directly provide the linear deviation and thereby provide the convenient means of inspection of a work part. The entire setup is enclosed in a PVC enclosure and tubing. In order to set the instrument to zero, a screw is provided to move the projected image of a graphical over a scale. अब वो एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट जब देखेंगे तो पता जाएगा, there is a method for adjustment basically. Subsequent readings are either plus or minus value depending upon whether the dimensions is larger or smaller than the set value respectively. तो वो जैसे ही ये आपका प्लंजर ऊपर नीचे करेगा, you will get the positive and the negative values on that particular scale. उसके बाद होता है ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। इसमें यूजुअली हम लोग प्रोफाइल देखते हैं, जैसे आपको गियर टीथ की प्रोफाइल देखनी है या स्क्रू थ्रेड की प्रोफाइल देखनी है तो वो देखते हैं। तो यहाँ हम मेजरमेंट नहीं करेंगे या वैसे कंपेयर नहीं करेंगे, इसको प्रोफाइल को कंपेयर करेंगे। यहाँ जैसे लिनियर डायमेंशन नहीं होगा, जैसे हाइट या थिकनेस नहीं होगा, यहाँ जो प्रोफाइल होता है, मान लो जैसे गियर टीथ होता है उसकी प्रोफाइल होती है, इंजीनियर प्रोफाइल होती है, या उसकी प्रोफाइल अनदर प्रोफाइल फॉर एग्जाम्पल से ऐसा होता है, एक होता है इन्वोल्यूट और खुद ही बोल रहा हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार कौन कौन से होते हैं, एक होता है इन्वोल्यूट और दूसरा होता है इंजीनियरिंग कार। आपने पढ़े होंगे ना, मैं भूल रहा हूँ उसको। इन्वोल्यूट कार बनाया था कभी आपने? एनी आंसर? No answer. Are you there? Hello. Yes sir. कोई बताएगा कि इन्होंने घर बनाया ना ड्राइंग में आपने? नहीं बनाया था, चलो कोई बात नहीं। तो जैसे मैं बता रहा था कि स्क्रू थ्रेड प्रोफाइल फॉर एग्जांपल इससे होता है ना, ये स्क्रू थ्रेड प्रोफाइल, ऐसे प्रोफाइल आपको देखनी है वी थ्रेड वाले, ठीक है। अब यहाँ लिनियर डायमेंशन नहीं देखेंगे इस ऑप्टिकल प्रोजेक्टर में, यहाँ नीचे एक स्टैंडर्डाइज प्रोफाइल होगा और इसकी इमेज जनरेट होगी, और यहाँ जो डिफरेंस देखेंगे हम, जैसे एंगल का डिफरेंस देखते हैं आपको, या ये प्रोफाइल मैच हो रही है नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि ये स्टैंडर्डाइज है और ये आपकी एक्चुअल प्रोफाइल है जिसको आप देख रहे हो, तो ये डिफरेंस आपको पता लग जाएगा उस पर्टिकुलर केस में। तो दैट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस ऑप्टिकल प्रोजेक्टर बेसिकली। An optical projector is a versatile comparator which is widely used for inspection purpose. It is especially used in a tool room application. It projects a two-dimensional magnified image of a workpiece onto viewing screen to facilitate the measurement. It comprises three main elements: the projector itself comprising a light source and set of lens housed inside the enclosure, the work table to hold the workpiece in a place, and the transparent screen with or without the chart gauge or for comparison or measurement of the part. या आप वैसे भी कर सकते हो, या you can use for example standard chart also, उसके नीचे होता है। तो it look like in this particular way, यहाँ एक लैंप होगा, ये प्रोजेक्टर लेंस होगी आपकी, ये मिरर है फॉर एग्जांपल, ये स्क्रीन है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। लुक एट दिस वन, इसकी प्रोफाइल आपको देखनी है, तो यहाँ इसकी इमेज जनरेट हो जाएगी, लार्ज इमेज फॉर एग्जांपल। जैसे आपने ये इमेज जो होगी इस तरह से इमेज आपको दिखाई देगी इसमें, लाइक दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है ना। और यहाँ इसमें इसके ऊपर आप जो स्टैंडर्डाइज इमेज है उसका जो क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट बोल लीजिए उसको, या बटर पेपर पे उसकी इमेज होती है, वहां ये रखेंगे इसमें। तो दोनों का इमेज कंपेयर करोगे, मान लो ये आपकी एक्चुअल इमेज है ऑन द बटर पेपर, इट विल लुक लाइक इन दिस पर्टिकुलर वे, ठीक है ना। ये डिफरेंस इसमें आपको देखा देगा कि ये वेदर दैट फॉर एग्जांपल प्रोफाइल ऑफ ए ऑब्जेक्ट दैट कंफर्म टू फॉर एग्जांपल स्टैंडर्डाइज्ड वन और नॉट।
और टू व्हाट एक्सटेंट इट इज कंफर्म। तो ये ऑप्टिकल प्रोजेक्टर का पर्पस होता है बेसिकली। तो we will step the various part of the optical पार्ट्स में लाइक दिस पर्टिकुलर वन, और यहाँ से स्टार्ट करना होता है। और हर पॉइंट पे जैसे यहाँ रेडियस इसकी मान लो 10 है, तो यहाँ 10 लेंगे हम, मान लो यहाँ 20 कर देंगे इसकी लेंथ, यहाँ 60 70 एक्सेट्रा। जो पॉइंट मिलेगा उसको ज्वाइन करेंगे, इट विल लुक लाइक इन दिस पर्टिकुलर, ये ऐसे प्रोफाइल बनती है लास्ट में लाइक दिस। ये इस तरह से कर्व आपने बनाया हुआ है कभी? सर फर्स्ट सेमेस्टर में बनाया था इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो वही तो पूछा, मतलब ये प्रोफाइल होती है, इस प्रोफाइल को, ये प्रोफाइल हम लोग यूज करते हैं गियर में, ये गियर टिप होते हैं ना, और उसको देखने के लिए ये आप हम जो यूज करें दैट इज कॉल्ड एज प्रोफाइल प्रोजेक्टर बेसिकली। तो ये प्रोफाइल अगर प्रॉपर्ली है या नहीं, उसमें कितना एरर है, यू कैन मेक यूज ऑफ दिस प्रोफाइल प्रोजेक्टर फॉर द पर्पस। हमारे लैब में है, बट आई डोंट नो वेदर दैट इज वर्किंग और नॉट। ठीक है ना, जब लैब स्टार्ट हो जाएगी तब देखेंगे। So we'll try to find out whether we can able to measure this, see the profile or not. Then measurement of tool wear. अच्छा, आप अभी आप MP2 में अपने tool ज्योमेट्री आपकी हो गई MP2 में? हेलो, कटिंग टूल ज्योमेट्री आपने किया है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की, अभी जो आपका चल रहा है सेमेस्टर इसमें MP2 में? हाँ जी, कोई बताएगा? हाँ नहीं सर, अभी यूनिट 2 में आएगा सर वो। यूनिट 1 में होता है कटिंग टूल ज्योमेट्री, टूल सिग्नेचर वगैरह स्टार्टिंग में होता है, तो टाइप्स ऑफ चिप्स वगैरह वो तो बड़ा होगा, टाइप्स ऑफ चिप, कंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस विद बिल्ट अप है, इस तरह से कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है। हाँ, तो ये टूल गियर भी इसमें एस्पेक्ट होता है। तो जो एंगल आपके एंगल में, जैसे आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, उसका आपको एंगल मेजर करना है, तो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस प्रोफाइल प्रोजेक्टर। ये मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि कहाँ यूज होता है, because you are dealing with this particular for example things in your workshop. तो drawing of a tool to scale is made, देखो कैसे करता है, drawing of a tool to scale is made on the tracing sheet, जिसको बटर पेपर होता है बेसिकली। The tracing sheet is clamped on the screen. Now the use tool is fixed on the table and image is projected onto the required with the required magnification. मैंने बताया ना, बटर पेपर पे आपको फिगर बनाना होता है, तो वहां वो रिफ्लेक्ट होता है जो भी आपका इमेज आएगा। Using a pencil, one can easily trace the actual profile of the tool on the tracing sheet. This image superimposed on the actual drawing is useful for measuring the tool wear. तो यहाँ से आपको टूल, मतलब टूल आपका कितना wear off हो गया, वो भी आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं by using, for example, this 2D image basically. तो इसका प्रैक्टिकल यूज है। इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर,
Electrical and electronic comparators are in widespread use because of their instantaneous response and convenience in amplifying the input. तो ये nowadays we are having the comparator of electrical and electronics. इसमें ये convenient use मतलब convenient होता है, reading में भी convenient होता है, और जो आपको response चाहिए for example जिसको amplify करना होता है by for example using electrical signal, वो आसानी से हो जाता है. So nowadays we are having this kind of comparators also. An electronic comparator in particular can achieve an exceptionally high magnification of order of 10 to the power 5 as 1 quite easily. मतलब look at the magnification that is possible. ठीक है ना? Electrical and electronic comparators mainly differ in respect to magnification and type of output. However, both rely on the mechanical contact with the work to be measured. Electrical comparators generally depend on the Wheatstone bridge circuit measurement. ये आपने electrical system में किया होगा? किया है कभी आपने? ये इसमें वो वोल्टेज डिफरेंस आता है बेसिकली. ये किया है आपने वेस्टर्न ब्रिज? इलेक्ट्रिकल लैब में होता है. आई डोंट नो. चलो किया होगा होपफुली. A direct current circuit comprising 4 resistors, two on each arm, is balanced with a ratio of resistance in the two arm are equal. तो ये 4 होते हैं टोटली, उसको बैलेंस करना होता है. यू हैव द करंट फॉर एग्जांपल डीसी करंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंसिंग एलिमेंट, प्लंजर रिजल्ट इन armature connected to one of the arm of the bridge circuit to cause imbalance in the circuit. ये इनिशियली बैलेंस्ड होता है, जैसे आप मूवमेंट करोगे मतलब ये कनेक्टेड होता है फॉर एग्जांपल टू प्लंजर बेसिकली. जैसे इम्बैलेंस हो जाएगा तो वो आपको रीडिंग दे देगा उस पर्टिकुलर केस में. दिस इम्बैलेंस इज रजिस्टर्ड एज एन आउटपुट बाय galvanometer, which is calibrated to read in units of linear moment of plunger. Magnification of order of say 10, ये raised to power 4 होगा. एक मिनट. इसको ये font ठीक है. तो look at magnification of order 10 to the power 4 as one are possible with the electrical system. The block diagram given in figure illustrates the main element of the electrical comparator. Look at ये इस तरह से होता है. For example, the elements of electrical comparator ये आपका armature है, ये arm है, ये plunger है, ये coil 1, coil 2 है, and flexible strip and so on. The plunger is the sensing element, the moment of which displaces an armature inside the pair of this coil. Moment of the armature causes a change in the inductance in the two coils, resulting in a net change in the inductance. The change causes the imbalance in the bridge circuit, resulting in an output. Output display device, whether analog or digital, is calibrated to show the reading in the units of length, that is linear displacement. Linear variable differential this transformer, that is called as a LVDT, is one of the most popular electromechanical device used to convert small mechanical displacement of displacement into amplified electrical signal. तो इसकी रेंज क्या होती है? Of order of say few millimeter to the fraction of millimeter. मतलब you can get the reading in terms of say micron. Then electronic comparator on the same line. Electronic comparator are more accurate and reliable, which has made them the preferred choice in many applications. While the electronic comparator is more complex, advances in the integrated circuit have reduced the size and power consumption of the equipment. ये IC डिजाइन होता है बेसिकली, वो इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट है. यू कैन जस्ट रीड दिस थिंग कि वो साइज छोटा हो जाता है, पावर कंजम्पशन कम है. Most significant advantage offered by electronic comparator is the speed of the response. Measurement rate of say 500 per minute is easily accomplished by an electronic comparator, making it well suited for dynamic measurement. तो जैसे मान लो आपको मैंने शायद कल भी बताया था, रेलिंग ऑफ शाफ्ट आपको देखनी है, या डेविएशन ऑफ द शाफ्ट आपको देखना है कितना हो रहा है ड्यूरिंग द रोटेशन फॉर 100 आरपीएम फॉर 200 आरपीएम एक्सेट्रा. यू कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ से कंपैरेटर. For example, thickness of a strip coming out of a rolling mill. ये देखो, thickness of a strip coming out of a rolling mill, or deflection of a machine part under bearing load. जैसे मैंने example दिया अभी shaft का, be measured over a given period of time
तो ये आप मतलब लगा के रख सकते हो एंड यू आर गेटिंग फॉर एग्जांपल से दिस 500 रीडिंग ए पर मिनट, तो वो एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और उसमें से you will get to know about the how that particular shaft is deviating from the actual size or how the thickness of that particular say strip which is coming out of a rolling mill that vary whether you are getting the uniform value or not. The following advantages make electronic comparator superior to the other type of comparator. Advantage of electronic comparator: high accuracy and reliability, high sensitivity in all ranges, high speed of response, easy provision for multiple amplification ranges, versatility. A large number of measurement situations can be handled with the standard accessories. Easy integration into automated system. हाँ जी, कहिए, any problem? Easy integration to automated system. Continuous output of electronic comparator can be achieved in a numerous way. However, the basic principle involved is that AC voltage applied to gauge head is altered by deflection of mechanical spindle. The spindle deflection is in response to the size of the workpiece being measured. Following are the some of the means employed for electronic gauging method of electronic gauging. Method of electronic gauging, ठीक है? ये डिफरेंट तरीके टू गेट फॉर एग्जांपल दैट पर्टिकुलर वैल्यू, इसको आप एक तरह से बोल दीजिए वे ऑफ मेजरमेंट और वे ऑफ असेसिंग दैट गेटिंग द आउटपुट. One of the earliest electronic comparators employed a movable spindle actuated armature whose change in position caused an imbalance of bridge circuit. This imbalance resulted in a moment of a meter hand. ये एक तरीका है. Second system is movable coil primary, as this coil is linearly displaced with respect to the stationary secondary coil. There is a change in output voltage. This change in voltage in turn displaces the meter hand accordingly. Magnification of up to ये 10⁵ के लिए can be achieved in this way. Many electronic gauges use LVDT, जो भी बता ना कि that is the linear variable differential transfer of principle to achieve the high magnification. Another electronic system employ capacitive type gauge hand. In this type of comparator, electrical energy is applied to two metal plates, one of them movable with a spindle. As their air gap between the plate changes, the change in the capacitance result in a imbalance in the bridge circuit. This changes the output voltage, which is further amplified electronically and displaced in either analog or digital form. So there are different means to, for example, carry out this comparison. Moment at the probe tip actuates the inductance transducer, which is supplied with an AC from an oscillator. Moment of the probe changes oscillator frequency, which is demodulated and fed on the electronic comparator circuit. The change in frequency with respect to the present frequency is measured for linear displacement. So there are different means for this particular electronic comparator. ये इसका एक commonly used comparator होता है sigma electronic comparator. So what are the, for example, the elements are there. That is, for example, this is a for example ये आपका probe है, इसके नीचे आप वो जो भी object लगाएंगे, transducer है, for example, this oscillator, then amplifier, demodulator, and you will get the reading over here. The moment at the probe tip, मतलब ये वाला actuates this inductance transducer, which is supplied with an AC source from oscillator. The transducer converts this moment into electrical signal, which is then amplified and fed via oscillator to a demodulator. Look at this one, how it works. And then the current in the DC form then passes to the meter and probe tip moment is displayed as a linear measurement over a circular scale. Various measuring and control unit can be incorporated, which can provide for a wide range of the single or multiple measurement to be made simultaneously. Using various adapters to suit the work, the comparator can
we put to many applications such as external, internal gauging, tightness testing, thickness gauging, tube wall thickness, and so on. Sigma electronic computer is extremely popular in inspection process because of the following reason. It is easy to use and provide convenient means of measurement. It has a high degree of accuracy and repeatability. It has a provision to set several range of tolerances very easily. Light indicator actions on its display unit enable fast inspection. Since the inspector of the component does not have to refer to this scale every time, it can be easily integrated with the computer or microcontroller. ये आप लोग पढ़ते होंगे तो ये मतलब डेटा एक्विजिशन सिस्टम जो होता है उसमें आप यूज कर सकते हो. You will get the that you can integrate it with the computer. तो वहाँ आपको डिस्प्ले आ जाएगा, रीडिंग आ जाएगी. Therefore, inspection data can be recorded for the further analysis. तो जहाँ मतलब जो large amount of data होता है, जैसे मैंने बताया कि आपको डायनेमिक लोडिंग है और उसमें आपको डिफ्लेक्शन देखना है, जिसमें कि नंबर ऑफ साइकिल्स है, फॉर एग्जांपल आरपीएम उसका 500 है और आपको रीडिंग मिल रही है 1 मिनट में 500. तो वो डेटा लार्ज डेटा जनरेट होता है, उसका एनालाइज करने के लिए या उसको एक्विजिशन करने के लिए इस तरह का सिस्टम आप यूज कर सकते हो. न्यूमेटिक कंप्यूटर अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल वन. हालांकि इसको अलग तरीके से हम उसको क्लासिफाई करते हैं बिकॉज़ हियर वी आर यूजिंग द प्रेशराइज्ड एयर फॉर द पर्पस ऑफ सेंसिंग द डिफरेंस इन द डायमेंशन. So pneumatic computers use air as a means of measurement. The basic principle involved is that change in the calibrated flow responds to change in the part feature. तो जैसे आपने प्रेशर सेट कर लिया है और मान लो देयर इज अ चेंज इन द प्रेशर, तो नेचुरली बिकॉज ऑफ फॉर एग्जांपल द पार्ट ज्योमेट्री पार्ट फीचर, तो वो आपको डिस्प्ले पे आ जाएगा कि प्रेशर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है. Accordingly, you can, for example, find out whether the part is acceptable or rejected, to be rejected. This is actually using several methods and is referred to as a pneumatic gauging or air gauging or the pneumatic metrology. Since a pneumatic gauge lends itself to the gauging of several features at once, it has become indispensable part of production inspection in the industry. तो ये commonly use होता है pneumatic system. Is possible to gauge length, मतलब क्या क्या हम लोग कर सकते हैं by using pneumatic this comparator or the gauging. Basically you can measure the length, you can measure the dimension, you can measure the squareness, you can measure the parallelism, or compare. It is better way to consider so that you can compare the taper concentricity etc using a simple setup. For instance, if one is inspecting the bore of an engine cylinder, it is also possible to assess its size. जैसे आपने बोर आपको देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको डायमीटर मेजर करना है कि कितना है. एट द सेम टाइम जो वेदर इट इज सर्कुलर और नॉट, वो भी आप उसमें असेस कर सकते हो. वेदर इट्स साइज, टैपर, चेम, फॉर एग्जांपल कैम्बर मतलब कर्विंग कितनी है उस पर्टिकुलर केस में, टैपरिंग कितनी है, स्ट्रेटनेस इन द सेम सेटिंग. तो कई सारी चीजें आप एक ही इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हो. Pneumatic metrology is quite popular because of several advantages: absence of metal to metal contact, higher amplification and low cost. हालांकि लो कॉस्ट तो होता नहीं क्योंकि ये इसमें यू रिक्वायर्ड कंप्रेसर द सिस्टम इज लार्ज वन बेसिकली. ठीक है. Absence of metal to metal contact between the gauge and the component being inspected is greatly increase the accuracy of measurement. तो यहाँ metal to metal contact नहीं है, तो the chances of accuracy that is higher. The gauge also has a greater longevity because of say total absence of variable part. तो यहाँ variable part, there is no moment, so naturally there is no variable part as far as the probe is concerned basically. क्योंकि जैसे हम उसमें डायल इंडिकेटर में जो probe contact में होता है, तो there are high chances of say this wear. तो यहाँ वो नहीं है. Amplification may be increased without much reduction in the range, unlike mechanical or electronic instrument. However, similar to electronic comparator, amplification is achieved by amplification of power from external source. Hence, the pneumatic comparator does not depend on the energy imparted to the pickup element by contact with the component being inspected. So these are the functional and metallurgical features of pneumatic comparator. No bearing part है, metallurgical features, non-contact inspection of the work part, rapid response, minimum gauging force, remote position of gauging head,
both variable inspection, variability in size, activate inspection जैसे go no go type वो possible है. Self cleaning of head and part, high range of amplification, no hysteresis. उसके बाद scope for inspecting the diverse part feature, compact size of gauge head suited for varied inspection such as line, position, surface topology, topography basically. So pneumatic compactor are best suited for inspecting multiple dimensions of the part in a single setting ranging from 0.5 to 1000 mm, 1 meter तक. It is also amenable for online inspection of the part on board a machine tool or equipment. ठीक है, तो ये ऑनलाइन भी आप कर सकते हो उसको, मतलब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं. यू कैन गेट रीडिंग. Based on the type of gauge circuit, pneumatic gauges can be classified as a free flow gauges and the back pressure. तो दो तरह के इसमें होते हैं, एक होता है free flow, एक होता है back pressure. तो back pressure gauges are developed first, but free flow gauges in greater use. तो back flow जैसे होता है ना, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. घर में जब आप नल में पाइप लगाते हो और जो पानी आपको गार्डन में देना होता है, तो जो पाइप का जो टिप है उसको दबा के रखो, तो क्या होता है उधर में जो आपका जो पाइप लगा हुआ है टैप में, वो कई बार निकल जाता है ना, होता है ना, ऐसे करके देखा है कभी? ये सिंपल मेथड है. Are you listening really to me or not? Yes, sir. ये करके देखा है, जो पाइप लगाते हैं हम उसमें टैप में, और उसमें उसका जैसे गाड़ी वॉश करनी है आपको या गार्डन में पानी डालना है, तो पाइप के जहां से पानी आ रहा है उसको दबा के रखो तो वो पाइप निकल जाता है. सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ बैक प्रेशर बेसिकली. और दूसरा है फ्री फ्लो. यहाँ हम बैक प्रेशर यूज नहीं करेंगे, फ्री फ्लो जो कांसेप्ट यूज करेंगे. तो देयर आर टू टाइप्स. तो पहले हम देखते हैं फ्री फ्लो एयर गेज. This uses a simple pneumatic circuit. Compressed air with pressure in the range of say 1.5 to 2 bar is passed through a tapered glass column that contains a small metal float. The air then passes through a rubber or plastic hose and exit to atmosphere through orifice in a gauging head. दिखा देता हूँ मैं इसको, इसका फिगर भी होगा कि इस तरह से होता है. ये कॉम्प्रेस एयर है आपके पास, यहाँ पे आप एयर फिल्टर लगा लोगे सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ से कंटामिनेशन. यहाँ प्रेशर रेगुलेटर है, ये यहाँ से जाएगा. ये यहाँ आपका शट ऑफ वॉल है, अगर बंद करना स्टार्ट करना है. ये आपका कॉलम होता है, बेसिकली ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर ये फ्लोट है, ठीक है, और ये आपके स्केल है. एंड देन यहाँ एयर ब्लेड, मतलब अगर एक्स्ट्रा मतलब मोर देन ये प्रेशर आपका अगर मान लो ज्यादा हो गया या उस पर्टिकुलर केस में, यू कैन जस्ट ब्लीड द एयर आउटसाइड मतलब टू द एटमॉस्फेयर. यहाँ ये जीरो एडजस्टमेंट स्क्रू है फॉर एग्जांपल. एंड देन दिस पाइप पास थ्रू, फॉर एग्जांपल ये आपका मेजरिंग हेड है, और मेजरिंग हेड ये लुक लाइक दिस पर्टिकुलर है. ये इसके यहाँ से एयर आएगी, यहाँ से प्रेशराइज एयर आएगी यहाँ से, और यहाँ से एग्जिट है इसके लिए, ठीक है ना, दोनों तरफ से. तो जैसे एग्जिट आएगा यहाँ एक तरह से फ्री फ्लो मान के चले इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है ना. तो उस केस में क्या होगा, यू कैन मेजर. अब ये आपने फ्लोट सेटअप कर दिया, मान लो जीरो जो भी आपने स्टैंडर्डाइज एलिमेंट है, मान लो बिकॉज ऑफ से प्रेशर डिफरेंस जो भी आएगा, ये फ्लोट आपको ऊपर या नीचे हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है. जैसे आपका ये प्रेशर डिफरेंस आ गया इस पर्टिकुलर केस में, यू कैन मार्क दैट पर्टिकुलर रीडिंग कि ये इसकी साइज आपने सेट की फॉर एग्जांपल सम वैल्यू 40 फॉर एग्जांपल आपको मेजर करना है, और ये वेरिएशन अगर आ रहा है तो या तो ये ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा. अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस इन द एक्चुअल साइज एंड द स्टैंडर्डाइज्ड साइज. Since so look at this one. The same the gauging head is inserted inside the work part that is being inspected. There is a small clearance between the gauging head and the work part. This restricts the flow of air, thereby changing the position of the float inside the taper glass column, as shown in the figure. Compressed air from the factory line is filtered and reduced to required pressure. The shut-off wall is provided to ensure the shut-off of air supply when not in use. Air blade and zero adjustment screw are provided to facilitate calibration of this particular gauge. तो जहाँ सेट करना है accordingly आप सेट कर सकते हो by using air blade and that particular one. जैसे मैंने आपको बताया ये
ये बिट एक्स्ट्रा अगर है तो आप एक्सेस में उसको छोड़ दोगे क्योंकि आपको सेट करना है, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, इट विल नॉट सेट टू पर्टिकुलर हाइट फॉर एग्जांपल, इसको सेट करना होता है, तो ये सेट कर देंगे इसको, देन ये उसी का फिगर है, सेम फिगर. The gauging head is mounted onto a handle which provide convenient way of handling the gauge head during the inspection. The amount of clearance between the gauge head and the work part determine the rate of airflow in the glass column, which in turn regulate the position of flow. The figure illustrates the relationship between the clearance and the flow rate. It is clear from the graph that the flow rate increases when the clearance is with the increase in the clearance, and the curve has linear position which is used for the purpose of measurement. तो ये curve होगा, हाँ this is one. ठीक है, look at this particular. क्लियरेंस ज्यादा होगा तो नेचुरली प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, इस पर्टिकुलर केस में क्लियरेंस कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा. लुक एट दिस इज अ पोजीशन. अब दोनों केस में ये यू विल गेट द रीडिंग फॉर एग्जांपल से 0 या जो पोजीशन आपको मिल जाएगी, ये या तो इधर शिफ्ट हो सकता है या तो इधर शिफ्ट हो सकता है, आइदर वे. तो फ्लो क्लियरेंस कर्व इज द एयर गैप इन द गेजिंग. दोनों ही केसेस में आपको रीडिंग मिलेगी, लेकिन इससे ज्यादा मांग है उस केस में यू विल हैव फॉर एग्जांपल द दैट डिफरेंस हो देयर, दैट इज द फ्लो. This linearity in the gauging range permit the dimensional variation to be accurately measured up to 1 micron. तो 1 micron तक measure कर सकते हो. A calibrated scale enables the reading to be directly read from the scale. Amplification of up to 1 raised to power 10 1 into 10 raised to power 5 as 1 has been built into this gauge. High amplification and the long range permit easier and accurate reading. तो ये pneumatic gauges है. इसका जो next part है वो कल देखते हैं. कल नहीं, कल तो क्लास नहीं, परसों है, ठीक है ना. Another significant advantage of this type of pneumatic gauge is that it is relatively free from the operator error. Gauge reading will be uniform from operator to operator because they do not depend on the high degree of operator skill or sense of feel during the gauging. तो ये आपको स्केल के हिसाब से मिलेगा. So there is no need to worry about the operator who is operating that particular thing. उसके बाद नेक्स्ट होगा, चलिए उसको कल देखते हैं. बैक प्रेशर. So we are stopping now. I'm just going to have your attendance. So for more details, you just read the book, any book which is available with you. Okay. अच्छा, ये फ्राइडे में कल तो क्लास नहीं है, फ्राइडे में सुबह हो सकते है क्लास 10 बजे. ओके, अटेंडेंस पूर्वी तुलसियान Present, sir.